Dear students, it is business studies of class 12th. Last day we started our fifth chapter, that is organizing. It is second this function in any type of organization. First was planning. We knew that what is organizing and what are the different definitions of organizing. Today let us know the importance of organizing. Dear students, organizing, I already told you, it helps us in the smooth functioning of a business so that the organizational goals can be achieved. It helps the growth and survival of an enterprise, and it enables to meet the various challenges in the way of achieving our goals. There are some of the points which highlight the importance of organizing in an organization. Organization में organizing की अहमियत क्या है वो हम ये जो 7 पॉइंट्स हैं उनके ज़रिए हम जान सकते हैं. फर्स्ट जो है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग का ये एक फ़ायदा है कि इसमें स्पेशलाइजेशन जो है कोई भी इंसान अचीव कर सकता है. Because in organizing what we do, the work is systematically allocated. अशखास को, चीज़ों को, काम जो है वो एक सिस्टम के ज़रिए, वो एक पैटर्न के तहत उन्हें असाइन किया जाता है. और and the work is, it is divided in different parts. It is said right man for the right job. So that in that very case the efficiency of workers that is to be increased and they are to be motivated for their best. यानी वो अपनी अहलियत जो है उसको पूरी तरह से बरोकार ला सकते हैं क्योंकि वो एक ही काम बार बार करते हैं तो उसकी वजह से वो एक्सपीरियंस या उनकी अहलियत जो है बढ़ जाती है. सो इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन बिकॉज ए पर्सन रेगुलरली परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर जॉब and ultimately he becomes experienced in that very particular job. He gets specialization in that very job because he is given a limited chunk of work so that he can, as a result, he get a specialization in a particular job. So it is benefit of specialization. Second is clarity in working relationships. यानी इसमें क्या है, इसमें एक वर्कर जो है इस ये जो है ऑर्गेनाइजिंग जो इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग वर्किंग रिलेशनशिप. यानी उसे पता है कि मुझे किन लोगों के साथ काम करना है. ये जो है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, किन लोगों के साथ बात करना है. whom I am going to deal, whom I am going to share my views and ideas, whom I am going to share my work. So he is clear in the relationship is that whom I am dealing with, who are the people whom I am answerable, whom I am responsible, so that this makes clear there is clarity in working relationship so far as the organizing is concerned. Third is optimum utilization of resource. हम जानते हैं कि एक शख्स जो है वो रिसोर्सेज को बेहतरीन तौर इस्तेमाल करना सीख जाता है ऑर्गेनाइजिंग में, क्योंकि एक आदमी जो है he uses resources, whether that is human, physical, financial resource, he uses the resources to their fullest in the best possible way, in the most efficient way. So there is the best use or utilization of resources because the proper person is allocated proper job and overlapping it is avoided. Wastage is this it is avoided. Misconception it is avoided. Misunderstanding it is avoided. So there is optimal resources can be used in the best possible way. Fourth is adaptation to changes.
अब चेंज अगर किसी को कहीं पे चेंज करनी है तो उस लिहाज से वो चेंज कर सकता है। चेंजेस की उसमें आदत पड़ जाती है। अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस in the environment, a person changes his behavior. He makes the proper changes in this organizing or the enterprise. He modifies the things according to his views, and moreover it provides stability to the enterprise, and enterprise gets a grow and more chances of survival they are possible. So this is one of the advantages of this organizing. So we say that organizing is important in this way, that a person who is given a particular job, he gets adapted towards the changes. And fifth is effective administration. हम जानते हैं कि एक खास काम, एक मुख्तसर काम, एक छोटा काम असाइन किया जाता है एक आदमी को, तो उस लिहाज से उस पे नज़र रखना, उसको एडमिनिस्टर करना, उसको मैनेज करना, उसको गाइडेंस जो है वो आसान बन जाता है, क्योंकि एक इंसान को एक ख़ास काम असाइन किया जाता है। एंड it leads to specialization. It makes clear the authority and power. It provides a clear description of jobs. यानी काम क्या है आपका, आपकी अथॉरिटी क्या है, आपका पावर क्या है, आपकी ये जो इसमें से इफ़ेक्टिवनेस इंसान की बढ़ जाती है। और सिक्स जो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इसमें से लोग जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें जो है एक ख़ास काम असाइन किया जाता है, उन्हें मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो दिए नहीं जाते हैं, या किसी भी जैसे हम कहते हैं कि इट मेक्स प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ पावर्स, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैनेजर जो है वो असाइन करता है जॉब किसी को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, प्रॉपर वे होता है, तो उस लिहाज से वो शख्स जो है जिससे वो काम असाइन किया जाता है, डेलीगेट किया जाता है, तो वो अपने काम को बखूबी अंजाम देता है, वो बेस्ट मेथड्स, बेस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल करता है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एफिशिएंटली। एंड लास्ट है expansion and growth. So in presence of organizing, expansion becomes impossible. Growth of the business becomes possible because every person makes diversification, growth in according to his best this capability, so that this expansion, so that every this organizer, he takes up the new challenges in the best possible way. Or when he is holding a different geographical territory, new products, new departments, new options, new positions, he tries his best to increase the sales and ultimately the profits. So these are some of the things which make organizing very much important. Dear students, I think you would have got it.